आउटपुट के फॉर्मेट के अंदर आपके पास स्क्रीन लेआउट आ जाता है, रिपोर्ट्स लेआउट हो जाती हैं किस तरह से आपके पास रिपोर्ट जनरेट होती हैं, वो सारे डिजाइन आपके पास अवेलेबल है। वैलिडेशन रूटीन भी है। वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस ऑल के एनालिसिस केस के अंदर और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले आपसे हम डिस्कस करेंगे कि फाइल स्ट्रक्चर्स और डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। अभी तक आप जब भी किसी भी प्रॉब्लम को, स्ट्रक्चर को आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो फाइल स्ट्रक्चर आपके पास ये होता है कि आपकी जो फाइल है, उस फाइल को आप ऑर्गेनाइज किस तरह से कर रहे हैं, किस सर्टेन वे के अंदर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास डेटा स्ट्रक्चर है तो डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे स्प्रेडशीट हो गई या और भी फॉर्म्स हो गई। अब इस सेक्शन के अंदर हम सिर्फ ये डिस्कस आपसे करेंगे कि डिफरेंट डाटा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर कैसे आ सकता है। आई होप आपने स्प्रेडशीट और एक्सेल का नाम जो है वो सुना होगा। अब जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी कि मेरे पास बेटा कोई भी फाइल होती है, वो फाइल किससे बनी हुई होती है? वो फाइल मेरे पास रिकॉर्ड से बनी हुई होती है। रिकॉर्ड्स मेरे पास किससे बने हुए होते हैं? मेरे पास फील्ड से बने हुए होते हैं। और फील्ड में आपके पास एक आपकी यूनिक की होती है, जो आपके पास होती है आपकी प्राइमरी की। ये आपके पास एक एग्जांपल है डेटा के स्ट्रक्चर की, कि आपके पास डेटा का स्ट्रक्चर कैसे स्टोर हुआ है। जैसे राइट इन फ्रंट ऑफ यू आपके पास कुछ डाटा अवेलेबल है, लेकिन ये डाटा आपके पास, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके पास यहाँ फील्ड वन है। फील्ड वन क्या है बेटा? कि आपका जो है प्रोडक्ट कोड क्या है। आपके पास फील्ड टू है। फील्ड टू आपके पास क्या है बेटा? कि आपका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है। फील्ड थ्री आपके पास क्या है? कि आपके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है। फील्ड फोर प्राइस है। फील्ड फाइव उसकी डिपार्टमेंट है, एंड सो ऑन। यहाँ पे आपके पास उसके रिकॉर्ड्स भी हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज जो ये आपको शो कर रहा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर करने का मतलब ये है कि आपका डाटा स्ट्रक्चर किस तरह से हुआ है, मतलब इज इट इजीली अंडरस्टैंडेबल और नॉट। जैसे फॉर एग्जांपल इस यहाँ पे मेरे पास एक फील्ड है। उस फील्ड का नाम क्या है? मेरा प्रोडक्ट कोड क्या है। तो यू कैन एनालाइज एंड सी कि मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबका एक प्रोडक्ट कोड आ रहा है, फिर उनका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर आ रहा है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर के बाद डिस्क्रिप्शन है, फिर उनके प्राइसेस और उनके डिपार्टमेंट्स है। तो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ a data structure. So can you tell me that what is a data structure or a file made up of? Hello, can you tell me what is a file made up of? It's right written in front of you, the line that I have highlighted. File is made up of number of records. Beta, what are records? Um, Records are like um, primary keys. No, beta, primary key is the unique key, the most unique key, important key. Or can you give me an example that right in this chart, can you tell me that which one is the primary key? Which one is the unique key? Field 1 product code. Yes, because it is unique throughout. This is to be known as your product key. लेकिन बेटा मेरे पास रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स मेरे पास ये होते हैं जो सेवरल डेटा आइटम्स और टाइप्स आपके पास एक जगह पर मिक्स एंड मैच होती हैं, सो दैट इट इज़ इजी फॉर यू टू ऑर्गेनाइज योर डेटा। दैट इज़ अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड आपके पास हमेशा किस में से ब्रेकआउट होता है? वो फील्ड्स में होता है। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन अ फील्ड एंड अ रिकॉर्ड। फील्ड आपके पास हमेशा से बेटा वर्टिकल में होती है, और रिकॉर्ड्स आपके पास हमेशा से हॉरिजॉन्टल में होते हैं। ठीक है, जैसे आप इस कोड के अंदर भी देख सकते हो कि मेरे पास जो मेरी फील्ड है वो मेरे पास जो है, जैसे प्रोडक्ट कोड है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है, लेकिन रिकॉर्ड्स के अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज जो है आपके पास आ रही हैं। तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस कि आपके पास फील्ड नेम क्या है, फील्ड की लेंथ क्या है। Yes.
The next title I have is your डेटा टाइप्स। सो अब डेटा टाइप्स के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर है किसी का, तो बेटा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास मोस्टली किस फॉर्म में होता है? नंबर्स की फॉर्म में होता है, लाइक 0347+9279 लाइक दिस। कभी भी कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास जो है अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में नहीं आता। सिमिलरली Yeah. इफ़ यू आर राइटिंग अ नेम, तो नेम भी आपके पास बेटा कभी भी नंबर्स के अंदर नहीं आता, वो अल्फ़ाबेट्स में आता है। तो टू प्रूव दैट माई डेटा इज सेंसिबल, to prove that my data is accurate, I need to use data types. What is the use of data types? Data types का काम ये होता है कि आपका जो भी डाटा है उसको जो है वो एक्यूरेटली मैनेज करता है, और वो बताता है कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स जो है मुझे यहाँ पे यूज़ करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी का भी आपसे नेम ले रहा हूँ, तो नेम अल्फ़ाबेट्स में होगा, तो उसके लिए एक अलग डेटा टाइप होगी जो मुझे आपको आज की क्लास में बतानी है। अब जैसे बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक डेटा टाइप है आपके पास, अल्फा न्यूमेरिक। अब अल्फा न्यूमेरिक क्या करेगा आपके पास? अल्फा न्यूमेरिक इज द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन स्टोर अल्फा कैरेक्टर्स। अल्फा कैरेक्टर्स बेटा आपके पास कौन से हैं जिसमें लेटर्स भी आ गए, टेक्स्ट भी आ गए और न्यूमेरिक डेटा भी आ गया। जैसे हमारे पास हमारे होम एड्रेसेस होते हैं, जैसे समवेयर इन दुबई और कराची, यू कैन सी के हमारे पास एड्रेसेस और नंबर्स एक साथ मैच होते हैं। तो बेटा ये डेटा टाइप आपके पास कौन सी है? दिस इज अल्फा न्यूमेरिक। इसकी एक एग्जांपल भी आपके पास सामने दी हुई है। इसी तरह से आपके पास आते हैं बेटा कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स आपके पास होते हैं जो आपके सिंगल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, इस तरह से। और जैसे किसी भी स्टूडेंट को मैं ग्रेडिंग करता हूँ, तो ग्रेडिंग के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ? कैरेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अंदर बेटा किसी का नाम आ सकता है, किसी का कोई भी स्पेसिफिक सिंबल आ सकता है, तो आपके पास टेक्स्ट होता है। अब टेक्स्ट डेटा टाइप के अंदर आपके पास क्या है? यू आर गिवन विद सम स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स और नंबर्स जो आपके सिंबल्स के साथ आते हैं। योर फोर्थ डेटा टाइप इज योर बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप का मतलब है सिर्फ दो वैल्यू, सच एज यस और नो, ट्रू और फॉल्स। द फिफ्थ डेटा टाइप इज द न्यूमेरिक वैल्यू। अब न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? वो नंबर न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स आते हैं। जैसे आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हो गए, डेसिमल हो गए, आपके पास करेंसी हो गया, आपके पास जो डेट टाइम हो गया, ये आपके पास जो है बेटा 1 2 3 4 5 के में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी है कि प्रोडक्ट कोड है। अब प्रोडक्ट कोड की डेटा टाइप मेरे पास क्या है? टेक्स्ट। मेरे पास ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर की डेटा टाइप क्या है बेटा? इंटीजर। मेरे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की डेटा टाइप क्या है? टेक्स्ट। मेरे पास प्राइस की क्या है? जैसे करेंसी डिपार्टमेंट में कैरेक्टर्स टेक्स्ट आ जैसा आ सकता है। तो आपको डेटा टाइप्स में कोई प्रॉब्लम है? No. तो आई वांट टू आस्क यू दैट व्हाई डू यू थिंक देयर इज अ नीड फॉर डेटा टाइप्स? Data types are need for like to separate the information. सेपरेट द इक्वेशन Information की like इंफॉर्मेशन। ओके, फॉर एग्जांपल for example like passport number, name, ID, इट वुड बी बेटर इफ यू country. यूज द वर्ड आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन। सेपरेट मीन्स तो मतलब ये होगा कि आपने बिल्कुल अलग कर दिया, लेकिन आइडेंटिफाई मीन्स टू रिकग्नाइज इट। यू शुड यूज दिस वर्ड के सर, इफ आई वांट टू रिकग्नाइज माय इंफॉर्मेशन into a way that is understandable, so I use data type. All right. And how many data types do I have? 5 types of data types. Okay, can you explain me? Alphanumeric have like it can have text, numeric letters, numeric sorry, and Mm-hmm. letters also. And an example of it can be like
um taking an address like uh, example of address, or like number, like um the person where they Alphanumeric live. beta has both uh, numbers and alphabets both. Okay. And about characters, it's as a single letter we use, like for example, like for grading or for Like grade A, grade B, grade C, grade D. Okay, and the next one. and about text, it's like for example, we give an example of a name or a country, a name of a country, and this Okay. can be a string of letters or numbers or other Okay. symbols also. And about boolean, it's just yes or no. Like for example, my name is Laiba, so I will probably say yes. And if there is a statement of true and false, we will use always true and false. And about numeric, we have different data types: integers, decimals, currencies, date, and time. Integers are whole numbers. Decimals are non-integer values. Currencies are like dollars, Pakistani rupees, Saudi riyals, Qatari dinars, and all of that. And date and time, like today's date as 22nd of Feb, 22nd of December 2023. Okay, okay, that's wonderful. That's wonderful. That's great. They have also explained the other table as well that I explained in your records and fields, that if it is a product code, that means that you are using the text data type. If you are using a year of manufacture, that means you are using integer. If you are using a product description, that is a text. If you are using price, that is currency. If you are using department, that's text. Now I'm moving on to my next topic, that is your validation routines, and you need to understand that these are all a type of your um, design area. Okay. So beta validation routines are used to check that if you entered the data into the system, that is acceptable or not. This is why I use the technique to validate, to check that if my data matches the certain criteria or not. This is an automatic check by the computer system to check that if it is a part of programming or not. Like, for example, if there is a form and that form is required to enter your name, so validation is going to check that if the data that you entered is accurate or not by checking the data type that you entered in your name. Obviously, your name is Laiba. You are not going to add any contact number or phone number. So, what is basically validation? Validation is a process when your user enters your data into the computer. It is an automatic check by the computer as a part of its programming. So, when it comes to validation, validation can only be on the positive numbers entered, or it can be used to check that if if your system is accepting our data or not. So I have one, two, three, four, five, six types of validation routines. The first validation routine that we are going to discuss is your range check. Now, the range check is for going to give you a certain range, and it is going to check that if your data falls into that certain range or not. Like for example, if I give LIBA a question of marks 1 till 50, that means that now the marks should be within this range. But if
this range exceeds, that means your data is not accepted. So range is used to check that if the data is between an upper value, lower value or not. For example, a temperature can range from 12, from 10 to 50 degrees, but not than that. So this is an example of a range check. You need to understand that I am using the validation function. Validation ये चेक करता है कि आपने अपने कंप्यूटर के अंदर जो डाटा एंटर किया है, क्या ये डाटा आपके पास करेक्ट एंटर्ड है या नहीं, आपका जो यूज़र है उसने करेक्ट एंटर किया है या नहीं। तो ये सारे एरियाज मेरे पास यूज़ होते हैं। अब सेकंड मेरे पास क्या है बेटा, टाइप कैरेक्टर। ये चेक करेगा कि जो आपने डेटा एंटर किया है उसकी करेक्ट टाइप है या नहीं। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने नेम्स की जगह अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया और हाइट की जगह उसने कुछ लेटर्स ऐड कर दिए, दिस इज गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड विद योर टाइप चेक। वैलिडेशन के अंदर मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि जो मेरा एंटर डेटा है वो करेक्ट है या नहीं। थर्ड पे बेटे मेरे पास क्या है, मेरे पास है लेंथ चेक। लेंथ चेक ये चेक करता है कि जो मेरा डेट कंप्यूटर का डेटा है वो सिर्फ जो डेटा एंटर हुआ है उसकी लेंथ कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी मैं अपने पास डेट्स लिखता हूँ तो डेट्स के अंदर मेरे पास डेट आते हैं, मंथ्स आते हैं, मेरे पास बेटा ईयर्स आते हैं। एंड फॉर एग्जांपल इफ आई क्रिएट पासवर्ड, सो पासवर्ड शुड बी ग्रेटर देन 8 डिजिट्स। लेंथ के बाद बेटा आई हैव एन एग्जांपल ऑफ अ फॉर्मेट चेक। और फॉर्मेट चेक ये क्या चेक करता है कि जो आपका डेटा एंटर हुआ है क्या उसका करेक्ट फॉर्मेट है या नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर एडिंग योर डेट, और फॉर एग्जांपल if you are adding your password, so it is usually said that passwords are not more than 8 digits. Just after this, I have the presence check, and presence check is used to check that if your field is not left empty by anyone or not, has anyone entered the data or not. Now the last one is your check digit, and the check digit is used to it is basically a number, and that number is produced by the calculation of all others numbers. This is basically used on barcodes to identify that if they are properly manufactured or not. So, can you tell me what I just explained you, that what are validation checks or validation routines Validation validation is about checking the information if it's entered correctly. or not? And how many ways I have to check? Can you explain me one by one? There are 6 ways of validation checks. First, it's about range, and it can see that input lies between the acceptable value range. And like for example, if I take a example of students, like there are 18 students in class and 1 to 18, if it exceeds the limit of 18, it will not be entered. Okay, good, great. And other type, it can be type characters. Hmm. um for example, in this, if they're like, um if I ask someone for their name, if they give something like, not their name, they give their contact number or ID number, it Hmm. will not be accepted. And Hmm. uh, about ID, if they enter the name, it will not be accepted as well. And in length, um, it can check the data input, uh, and about its Length is used to example. check that what is the number of characters your enter text has. Okay. And for example, in password, like if we enter a password, like it has a limit of 8 digits.
So if it's more than 8 digits, it will not let you have that password. Good, And good. going to the format, it checks the input if uh, it checks the data if the it checks the input if the data is correctly formatted. For example, if your exam is on 12th January 2023, uh, if you have entered some wrong date, it will probably not count. And about presents, it can be like any space left. It won't be. It will obviously give an error about a space empty. And for example, And check digit. and about check digits, it um, sees if an extra digit is entered or no. Like for example, if I give an example of like if the digit is 1234, if the person entered 1235, it won't be accepted. Mm, good, good. Now, we are moving to the 7.2.3, that is your input formats or your data capture form. So, earlier than this, we were discussing about some examples of data input ways, that how can your data be added, and I discussed review validation routines, some types of data forms as well. Now, basically, what are data capture forms? Bete, data capture forms are often used to input data into the computer. डेटा के फॉर्म्स जो आपका डेटा कलेक्ट करते हैं, ये आपके पास यूज होते हैं ताकि आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर हो सके. दीज फॉर्म्स इंश्योर दैट आपका जो डेटा आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर हो रहा है, इज इट इन करेक्ट फॉर्म और नॉट. So they have to be designed very carefully into a way that all of the data is being stored into their database. Like for example, whenever you go onto any website, let it be of your school, college, or any social media app, the first thing that you usually do is that you complete your data capture form and data capture registration form. Now, the functionality of the data capture is to check that all of the users has added the data correctly or not. So data capture forms will be either paper-based or electronic-based, however it can be based on the application. Right. For example, just a moment. So we can definitely utilize paper-based forms to check that if a paper-based form needs to have a heading to make the purpose of the form clear or not, to make it clear to the person filling it in the form where they must place the answer, to make use of proper checkbox, to make use of characters and so on. So the basic purpose of your data entry form is to enter your data and to make sure that your correct data is entered or not. And to make that sure, you use different strategies, like you can check that if the headings are properly placed, if the data is in the correct format, if they are using the correct boxes or not, right? However, a computer that is dependent on it, if the computer has the following feature of data capture form, then it provides you with various functionalities. The first functionality is that you can use your text box to capture the data. You can use your on screen as well when completing the form, and you can also use drop down and combo back box whenever there are limited choices. You can even use your radio box as well, right? For example, right in front of you, this is an example of a data capture form.
that you know that what is your registration number, what is your making of a car, the model of a car, your date, registration, your price, and a save button, and so on. That's how it works. I hope I am clear to you, beta, regarding data capture forms. Yes. Now, just after you're adding up your data, there is the second important step, that is your screen layout and report layout. Now, just after the system has added all of the values, it results in some processing, and that processing shows you the results that like that is right in front of you. For example, it provides you with a picture, it provides you a text. So whenever we are entering the data, we should make sure that all output fields are correct, and we should avoid any instruction or description. Just give me a minute. Okay, just after your analysis part, design part, now here comes your testing stage, and your testing and the development stage is the final one. This is the place where you have completed your analysis, you have completed your design stage, and now you are ready to implement and execute. So before executing, you need to go on the testing stage. So your testing stage is equally important because you need to test your program before launching it as well. So it can check that if your system contains any of the error, if your system files needs to be structured, and if there are some errors into your data input capture forms, or if there are certain errors into your final output files. So uh, this is really important because if the correct data is stored, that means that your data from your database is being verified, and verified means that all of your all of your data is properly synchronized. There can be certain vulnerabilities, errors into that. So in your testing stage, you usually check all of them one by one, that if they are working at the correct pace or not. In your testing stage, what you usually do is that you complete a number of things. The first thing you do is that you test your data structures, you test your file structures. सर why we test our data structures? हम बेटा इस वजह से करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि हमारे पास जितने भी जो हमारा टेस्ट डेटा है वो एक करेक्ट फॉर्म के अंदर स्टोर है या नहीं। हम बेटा फाइल स्ट्रक्चर्स को टेस्ट करते हैं। फाइल स्ट्रक्चर्स को टेस्ट क्यों करते हैं? हम इस वजह से टेस्ट करते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि हमारा डेटा करेक्ट फॉर्मेट के अंदर या करेक्ट if your data is being correctly retrieved or not. So you should be also be noting कि मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ आपके पास उनका मकसद क्या है। आपके पास डेटा स्ट्रक्चर कहाँ यूज़ होते हैं, फाइल स्ट्रक्चर कहाँ यूज़ होते हैं। द थर्ड पार्ट इज योर इनपुट मेथड. Input methods is used to check that if all of the data that you are enter into the system, if it is correct or not. आपका डेटा जो भी एंटर है वो करेक्टली एंटर हुआ है या नहीं. देन यू हैव योर आउटपुट स्टेज. आउटपुट स्टेज चेक दैट द रिजल्ट एंड द डॉक्यूमेंटेशन if it is correct or not. And the last stage is your validation. Validation makes sure that all of the data you entered, if it is working or not. The next topic is the testing strategies, and then we need to move on this implementation, documentation, and evaluation before this topic ends. But before then that, I want to summarize all of this. I hope that
First of all, you should be clear with the design concept. Are you clear that why do I need to design it? Yes. Okay. And can you define me the difference between a file structure and data structure? Uh, दोनों one में क्या second. फर्क है? 8 minutes. बेटे file structures are used to check that if your file is properly stored or not. आपकी जो भी फील्ड, आपके जो भी आपका डेटा और डेटा स्ट्रक्चर आपका याद आता है कि उसकी फॉर्म कैसे है। जैसे इस एग्जांपल के अंदर हम एक स्प्रेडशीट यूज कर रहे हैं। कैन यू, स्प्रेडशीट हो गया या डेटाबेस हो गया, कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्राइमरी की? Primary key is the field one product code. बेटे इट इज अ यूनिक की, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट कोड। डेटा टाइप you have explained me, validation routines as well. Can you summarize me what are input formats? Input formats, data capture forms. For example, if I give an example of my name, if my name is not entered, it will automatically catch it. And um, Better data capture forms are used to check that if the data you entered is correct or not. There are certain things written as well. It makes sure that you have a proper heading. It makes sure that you have proper text boxes available or not, right? yes. Can you define me regarding output formats? What are these? Regarding output formats, it makes sure that it fits in one size and any instructional descriptions are clear and Okay, and apart from this, I gave you the homework to read out all of the things that we have discussed. Have you completed that? yes. Okay, so today you have these four titles more. You need to complete them as well. You need to Okay. overview all of these things so that in our next class, I will ask you individually the differences, why do I need them? You need to focus on the things that are checked on data entry, is that is your data capture forms। कौन कौन सी Okay. चीजें डेटा कैप्चर फॉर्म चेक करता क्या है, यू नीड टू रीड दैट आउट। और हमारे पास आउटपुट फॉर्मेट्स के अंदर भी, लाइक फॉर आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू लाइक फॉर 3 to 4 pointers. If you know them, if you know the concept, then you are able to solve your past paper question. So this is why I'm focusing on that. I hope that I'm clearing and I'm giving you the concept, right? Yes. यू हैव एनी, Yes. लाइक जैसे मैंने तुम्हें बताया कि एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर का एनालिसिस पार्ट है, एनालिसिस के बाद डिज़ाइन पार्ट है, डिज़ाइन के बाद फिर इनपुट आउटपुट फॉर्मेट्स हैं बेटा। फिर वो मैं बनाता क्यों हूँ, वो मैं बनाता कैसे हूँ, दिस इज ऑल ऑफ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो यू नीड टू फोकस ऑन ईच एरिया। Okay. Sir, I have जी queries about the class and the future. Um, First of all, can you please change the time of the class because on Thursday we have our weekends and it's hard for me to like continue the class on the weekends. बेटा, आई हैव आस्क्ड मिस फौजिया टू कोऑर्डिनेट along the times, so don't worry Okay. about the timings. Inshallah, Miss Fauziya will
coordinate a time that is suitable to you and that is suitable to me as well, right? Okay. It could either be on the weekends. I mean मेरे वीकेंड्स में, हमारे वीकेंड्स होते हैं पे जी फ्राइडे सैटरडे संडे, मे बी सम टाइम सैटरडे रात में या संडे दोपहर में। आप आई एम नॉट वो, मैं मिस फौजिया को स्लॉट्स बता दूंगा तो वो आपसे डिस्कस कर लेंगी। तो जी एक ठीक है। क्लास तो हमारे पास मंडे की है, दूसरी क्लास जो है वो हमें डिस्कशन से कोई एक ऐसा दिन रख लेते हैं जो आपके लिए इजी हो, मे बी संडे पे पॉसिबल। जी संडे पॉसिबल है। और आई हैव वन मोर क्वेश्चन हम्म। कि पाकिस्तान में तो ऐसा होता है ना कि आपको ओ लेवल्स की 8 एग्जाम्स देने पड़ते हैं। 7। तो यहाँ पे सऊदी अरब में आपको कोई आइडिया है कि कितने देने पड़ते हैं? तो कुछ लोग कह रहे हैं आपको 5 देने पड़ते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं। बेटा पाकिस्तान में आपको 7 एग्जाम्स देने होते हैं, जिसमें आपके पास ओ लेवल के सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद यू मूव ऑन टू योर ए लेवल्स। ए लेवल्स में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो 7 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास। ओके, ये मिस फौजिया भी जो है वो रजिस्ट्रेशन कराती हैं एग्जाम्स की, तो वो भी यस, जो है आपकी हेल्प आउट कर सकती हैं जीसीएसई के अंदर। लेकिन it's not about the registration, it's about the future career path that you want to select. For example, if you want to be a doctor or engineer या इस तरह से किसी भी फील्ड में जाना है, तो वो सब्जेक्ट्स के बेसिस होना। जैसे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियत और उर्दू इम्पॉर्टेंट है।